Is it recording? Yes, sir. It has started. You say the prayer. हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है. इसी में हमारा आत्म विकास समाया हुआ है. Okay. So last time we did Sutra 6 of chapter 2, Sadhana Path, talking about Asmita Klesh. And today we'll be doing another Klesh. There is Raaga, Sutra 7. And the Sutra reads, Sukhanushayi Raaga. A very simple and short definition of something which has got tremendous effect on our day-to-day living, our entire life. So such a concept of raga is described in just these few words. Sukhanushayi raga. So what is raga? Raga is that which follows the pleasurable experience or the experience of pleasure. That is what is raga. So it has been translated as attachment. So attachment is that which follows pleasurable experience. Now, last time when we were talking about Asmita, we saw that how Asmita gets related to the various kinds of objects which are there in the world. And Asmita doesn't stop at the level where it asserts itself in the form of consciousness. The main feature of Asmita is I am conscious. And then from that I am conscious, what follows is I know. So Asmita knows. But then knowing is also not enough. It has to move further. And we also know that when we are knowing things, it is not enough for us to know things. We want to act upon those things. So the second part of knowing will be doing, responding to it, reacting to it, working on it. So that's what happens. Knowing is not enough. Normally, when we join something like yoga or some spiritual discipline, most of the Indian thinkers, they say that be a witness, just know. But that is the most difficult thing. We cannot remain witness because the moment we start knowing, there are reactions which are coming. So unless these reactions are addressed, and when we analyze these reactions, they are coming from the sanskaras. So as long as those sanskaras are there, the reactions are not going to stop. So the witness-like attitude is not likely to be developed very easily. So that's why the second thing, doing, it comes. So in avidya,
Because of the influence of the avidya, the asmita is asserting itself as knower. I am conscious, I am knower, I am knowing. So the first part is the jnata. So अस्मिता asserts itself. अस्मिता में ये अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैं जान रहा हूँ, मुझ में जानने की क्षमता है, मेरी आंखें, कान, नाक, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके द्वारा मैं जान सकता हूँ. तो ये ज्ञाता के फॉर्म में अहंकार के जरिए अभिमान करता है, और ये अभिमान फिर आगे जो बढ़ता है कि ज्ञान जानने के बाद में इट asserts itself in the form of doer. तो अपने आप को बोलता है मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि कर्मेंद्रियां हैं. तो एक छोटा सा अगर उदाहरण हम कोई भी लाइफ में ले लें, हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो रोड क्रॉस करते समय पे अगर हम देखते हैं कि हम रोड के थोड़ा बीच में है और अचानक से एक बड़ी गाड़ी हमारे तरफ आ रही है, तो केवल ये जानना काफी नहीं होता है, इमीडिएटली वी रिस्पॉन्ड टू दैट. तो अलॉन्ग विद दैट नॉलेज द रिएक्शन कम्स, द डूअरशिप कम्स. तो इस प्रकार से जब भी ईगो एक्ट करता है, इस प्रकार से ईगो व्हेन इट गेट्स रिलेटेड टू वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ईगो बोलता है कि मैं करता हूँ. और आफ्टर करता व्हाट कम्स इज धर्ता, ownership, property, as if it is my property. So whatever is experienced by ego sense, asmita, that is retained in the form of memories, that is retained in the form of sanskaras. तो अस्मिता जो है वो तीन प्रकार के फॉर्म ले लेती है. मैं जानता हूँ, ज्ञाता हूँ, मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, मैं धरता हूँ, आई एम द ओनर. सो एक चीज हमको समझनी है कि वॉट एवर we are experiencing in life, though those experiences are in the form of knowing, those experiences are in the form of cognitions, perceptions, and once we have perceived something, once we have cognized something, it is retained in the mind in the form of sanskaras. So that retention part, memory part, sanskara part is related to dharta. So ज्ञाता, कर्ता, धर्ता, अस्मिता को अलग अलग ढंग से देखा जाता है. इसीलिए अस्मिता के अलग अलग नाम भी दिए हुए हैं, अलग अलग शास्त्रों में. कई बार हम लोग दूसरे नाम भी सुनेंगे इसके. तो ये यही तीन एस्पेक्ट हमेशा ध्यान में आएंगे कि एक ज्ञाता है, एक कर्ता है, एक धर्ता है, और तीनों एक ही एंटिटी है. अस्मिता जब जान रहा होता है तो ज्ञाता है, जब कर रहा होता है तो कर्ता है, जब वो रिटेन करता है कोई भी ज्ञान को स्मृति में, संस्कार में, तो वो धर्ता बन जाता है. अब इसी ढंग से हम लोग देखते हैं कि मतलब ये तीनों एस्पेक्ट जो है वो धीरे 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 बलवान होते जाते हैं. अब जो चीज का वो अनुभव करता है, वो अनुभव अगर उसको अच्छा लगता है तो उसको उसमें उसका अटैचमेंट या राग निर्माण हो जाता है. सो व्हाट इज राग? राग इज दैट विच फॉलोज सुख. सुख एज एन एक्सपीरियंस. तो ये हम लोग योग में हम लोगों ने सीखा है कि वृत्तियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो कंट्रोल करने योग्य वृत्तियां, ऑल दोस नोइंग स्टेट्स और दी वृत्तिस which are controllable, they have been termed as cognitive states of mind, and those are 5 in number, which we have seen in the first chapter: pramana, viparya, vikalpa, nidra, smriti. But then you see these vrittis, it is not that only 5 vrittis are there, but these 5 are primary vrittis which are to be controlled. But apart from that, there are other vrittis also which are known as avastha vritti also. So sukha, dukha, moha, abhinivesh, all these are avastha vritti. Raga, dvesha, these are avastha vrittis. So when we are having any experience, if that experience is agreeable, if we like that experience, then that is sukha. Anything which is agreeable, which is pleasant, which is liked, that is sukha. And whenever one experiences sukha, then automatically raga will be formed. That is what this simple sutra is trying to say. Sukhanushahi ragah.
तो जो सुख का अनुभव है उसके बाद उसकी जब सुख की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति के बाद में सुख की अनुभूति के संस्कार बनते हैं, और जब वो संस्कार बनते हैं तो उसकी मेमोरी आती है, उसकी स्मृति आती है. So whenever we remember that pleasurable experience which we had, we form a certain kind of attachment towards that pleasurable experience. And once that is happening, then we want to repeat that experience. This is how the raga is formed. अब इसको एकदम प्रैक्टिकल लेवल पे देखेंगे तो जैसे लास्ट टाइम मैं एग्जांपल दे रहा था कि बच्चा जब भी बड़ा हो रहा होता है तो अलग अलग अनुभवों से वो जाता है, गुजरता है. माँ के टच से, माँ के आवाज से, माँ उसको जो खिलाती है उससे. द चाइल्ड इज फॉर्मिंग वेरियस काइंड्स ऑफ रिलेशनशिप, और जहां जहां उसको प्लेजेंट लगता है, जहां जहां उसको सुख लगता है, जहां जहां कंफर्टेबल लगता है, वहां उसका राग अनुराग बढ़ जाता है या बन जाता है. इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि नाउ ही लाइक्स सर्टेन थिंग्स. और जहां पे उसका अनुभव डिसएग्रीएबल रहता है, जो उसको अच्छा नहीं लगता है, या उसमें कुछ जैसे कोई कड़वी चीज खिला दी, या उसको पिंच कर दिया, या उसको कोई चोट लग गई, तो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस उसको होगा. तो ही विल स्टार्ट हेटिंग, he will start disliking such kind of experiences. So right from the word go, the child is developing likes and dislikes. तो ये जो likes है, ये सब जो है, ये सब राग के अंडर में आती है. और धीरे धीरे ये रिलेशनशिप इतने गहरे होते जाते हैं, जैसे लास्ट टाइम मैं बता रहा था लास्ट सेशन में, कि इतने गहरे हो जाते हैं कि बाद में ये आदमी समझ ही नहीं पाता है कि वो जो एक्शंस कर रहा है वो ये राग और द्वेष की वजह से एक्शन कर रहा है. ये उसको ध्यान में ही नहीं कभी आता है. ये इतना ऑटोमेटिक लेवल पे चलता है कि ही डजंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन इट, he doesn't see anything objectionable in it, he doesn't see any connection of his suffering with this. That is the most surprising part of it, and that is why it is avidya. That is why it is avidya, because the person fails to recognize the connection between his suffering and his raga dvesha. He thinks raga dvesha are very common and raga dvesha is very desirable. उसके बिना तो लाइफ में कुछ मीनिंग ही नहीं है. तो अगर किसी को कहे भैया राग द्वेष आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो बोले फिर मैं जीऊंगा कैसे अगर राग द्वेष नहीं रहेगा. आई डू थिंग्स बिकॉज आई लाइक देम. इफ आई स्टॉप लाइकिंग देम, हाउ आई विल डू थिंग्स. नाउ दैट रिक्वायर्स अ लिटिल डीपर अंडरस्टैंडिंग. तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये राग जो है उसका क्या रोल है, और कहाँ किस हद तक उसका रोल हमारे जीवन में दुखों का साम्राज्य खड़े करने में है, हमको दुख देने में, हमारे लिए कठिनाइयां खड़े करने में राग का क्या क्या रोल है. इसको थोड़ा सा विचार करना जरूरी है. तो ये जब हम देखते हैं कि अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है प्लेजरेबल एक्सपीरियंस से, बहुत सारे एग्जाम्पल रोजमर्रा के जीवन में हम पता नहीं कितने एग्जाम्पल हम उसको ले सकते हैं. कि जो भी अभी जैसे कोई नई चीज हम लोगों ने आज टेस्ट की, आज अगर हमने नई टेस्ट की और अगर हमको अच्छा लगा तो इमीडिएटली वी गेट अटैच्ड टू दैट. And next time when we remember that thing, or when some occasion comes when we are facing that thing, immediately there is a desire in us to have that thing. खाने पीने की वस्तुओं से लेके कपड़े लत्ते, we have got n number of objects. ये जो विषय, जितने भी सेंसेस के विषय हैं, ये सभी में हमारा राग है, इसीलिए वो विषय हैं. उनसे हमारे सेंसेस के जरिए इंटरेक्शन होता है, उनका स्टिमुलाई सेंसेस रिसीव करते हैं, और उसके बाद में अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है. तो ये जो अटैचमेंट है, ये जब स्ट्रांग होते जाती है तो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि देन इट टेक्स अवे ऑल द डिस्क्रिमिनेटरी एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल. पर्सन इज नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली. पर्सन इज नॉट एबल, ही इज जस्ट ड्रॉन बाय दीज अटैचमेंट्स. और ये राग के चलते वो दिन रात उसी के पीछे, ही इज सीकिंग प्लेजर्स इनडिस्क्रिमिनेटली. So it goes on increasing. तो ये सूत्र के व्यास भाष्य में बहुत बढ़िया 3 शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है. 3 शब्दों का जो इस्तेमाल किया है वो है गर्ध. गर्ध, उसका आगे उसका मीनिंग दिया स्प्रहा. दैट मीन्स लाइकिंग. वी डेवलप अ लाइकिंग. और लाइकिंग होती है तो वी विश फॉर
that object. जो भी whatever we like, we wish to have it. Or we wish, if it is experience, we want to repeat it. If it is a possession, we want to possess it. If it is a thing, we want to have it. If it is a person, we want to repeatedly be with that person. So that is what initially happens, that we start developing a little liking towards something which is pleasurable, which is agreeable, which is giving us comfort, which is giving us a sense of pleasure. It is pleasant. So something which is pleasant, we develop a like for that. तो इसको उन्होंने गर्द कहा है और विश के बाद विश कहा है उसको. तो एक प्रकार की विश हमारे मन में डेवलप हो जाती है और लाइकिंग डेवलप हो जाती है कि हम इसको बार बार करें. ये सूत्र के बारे में जब मैं सोच रहा था थोड़ा, तो मेरे मन में अचानक वो ख्याल आया. काफी दिनों से मैं भी ऑनलाइन परचेसिंग करता हूँ, क्योंकि कोरोना में ये सीखना ही पड़ा. बाहर तो नहीं जा सकते थे, बहुत सारी चीजें ऑनलाइन मंगाते थे. तो मैंने एक चीज नोटिस की कि जितनी भी ऑनलाइन कंपनियों की सेल होती है, उसमें अगर आपको कोई चीज पसंद है और आपने उसको क्लिक किया, तो बोलेगा स्टॉक में नहीं है. तो स्टॉक में नहीं है बोलता है, और उसके बाद में दे गिव यू एन ऑप्शन. ऑप्शन क्या देते हैं? पुट इट इन द विश लिस्ट. शुड वी पुट इट इन द विश लिस्ट, ऐसा एक ऑप्शन आता है. और ये जो मार्केटिंग कंपनियां हैं वो बहुत ही समझदारी से काम करती है. उनको ह्यूमन नेचर का बहुत सही ढंग से पता है. तो इफ यू क्लिक दैट ऑप्शन एज यस, इफ यू पुट इट इन द विश लिस्ट, दे नो दैट यू आर कॉट. बिकॉज जो चीज हम लोग विश करते हैं या जो चीज हम लाइक करते हैं, उसके बारे में थोड़ा भी अगर ज्यादा सोचेंगे, या इफ यू आर रिमाइंडेड ऑफ दैट, इमीडिएटली देयर विल बी अ डिजायर फॉर दैट. So when you are putting this option, you are putting some object in the wish list, then you are surely going to get caught in the form of desire and you are going to surely buy it. So it is a trick played by the marketing company to give this option that do you want to put it in the wish list. So if you are putting in the wish list, तो ये गर्द है. एक विश करना, लाइक करना, ये भी एक प्रकार का राग है. Because very soon it will turn into strong desire. तो दूसरा शब्द जो व्यास भाष्य में बोला गया है कि ये गर्द जो है वो धीरे धीरे तृष्णा के रूप में परिवर्तित हो जाती है. तृष्णा मीन्स थर्स्ट, प्यास. अब ये थोड़ा सा विचार करके देखेंगे. जब हम राग के बारे में बात कर रहे हैं, शायद अभी भी हमारे मन में ये विचार चल रहे होंगे कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, वी हैव अटैचमेंट्स. बट इसका कितना बड़ा रोल है और इसकी क्या कीमत हम अदा करते हैं, ये शायद हमको पता नहीं है. तो इसके लिए इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करना चाहिए. तो ये जब तृष्णा बन जाता है, तो तृष्णा का अर्थ है प्यास. अब आप सोच के देखिए कि जब नॉर्मली तो हम प्यास लगती है तो पानी पी लेते हैं, तो हमको उसका ज्यादा अंदाजा नहीं आता है कभी कभी, लेकिन ऐसा अनुभव हम लोगों ने सभी ने लिया है कि बहुत प्यास लगी है और पानी नहीं है. तब हमारे मन की अवस्था कैसी रहती है? See, you are very thirsty and there is no water. Thirst is there. So you have to do something important. You are attending something important. You are in something which is very vital and important. But agar there is thirst, our attention again and again goes to water. And we are not able to concentrate well. We are not able to. Thirst का तो ऐसा है कि if there is not enough water in the brain, you cannot really remember anything. You cannot recall anything. Water is very necessary for the brain activity. So imagine करें कि अगर thirst है, there is lack of water in the body, we are very thirsty. Our focus is gone. Our body starts reacting in a certain manner, and mind gets confused. Mind gets really, heavy. And mind is not able to think correctly. That is what happens. तो ये तृष्णा जो है उसमें भी ऐसा ही होता है. When a person is taken charge by this तृष्णा, उसके मन में जब ये तृष्णा, जब ये बहुत strong desire जो बन गई, तो he is constantly thinking about that object of desire. And when he is constantly thinking about that desire, then he will put any kind of effort to attain that.
That is what happens. And if this process of Gardha and Trishna, it goes on increasing as it does in everybody's case, without exception in the world. As long as we are human beings, we are subject to this. This is a universal phenomena. We are all subject to Trishna. We are all subject to this Raaga. We all have attachments. We may have strong attachments or weak attachments. We may have different objects and people and situations and events and things for which we have attachment, but attachment is a universal phenomenon. So when it converts into a strong desire, then what happens is anyhow we want to attain it. And in many times, this may assume the form of what is known as a fourth factor, that is lobha, hankering, craving. It becomes as if, very, like in psychology, they use this term obsessive compulsive behavior. So sometimes the desire or attachment go to such an extent that it becomes an obsessive compulsive disorder in us. The moment the desire arises, the moment the craving arises, it needs to be fulfilled. And we will go to any extent to fulfill that. And we cannot stop it. And in this entire process, what is happening is we forget the connection between the senses and the desires and the consequences. And without any thought of consequences, without any discrimination, one will go on indulging in the objects of pleasure. In extreme cases, a person is not able to control at all his desires. He is not able to control his cravings at all. And when that happens, he is totally at the mercy of these desires and these attachments. He becomes a slave of this attachment. So whatever his attachment is telling, he will do that. And this way, he is indulging into something which is self-destructive. Because what happens is, whenever we have desires, those desires have to be fulfilled according to the rightness and wrongness. We have to use our viveka, whether they are desirable or undesirable, whether they are right or wrong. But a person with strong likes and dislikes doesn't bother about the wrongness and rightness, the desirability or the goodness or the badness and undesirability. He just go on indiscriminately wanting to fulfill his desires. And this ensures his destruction. So in case of such individuals who have uncontrollable thirst for objects, they have undesirable and uncontrollable cravings, hankerings. For such individuals, in chapter 2 of Bhagavad Gita, there are two beautiful shlokas which Krishna tells to Arjuna. And these two shlokas, they are very important and one must always remember them, particularly in chapter 2 when he is talking about Sthit Prajna shlokas, Sthit Prajna Darshan. Sthit Prajna person is a very, very characteristic person described in Bhagavad Gita in chapter 2. So Arjuna asks, what are the characteristics of a Sthit Prajna? Now, one of the characteristics of Sthit Prajna Darshan or Sthit Prajna Vyakti is that he uses Viveka. And whenever there is a danger of his senses getting entangled with the material objects, like a tortoise, he withdraws his senses away from the objects. And that way he protects himself. He protects his balance of mind, which is our daily prayer. Balance of mind is always lost because of raga and dvesha. Whenever we are under the influence of any strong raga or a strong dvesha, the balance of mind will be lost. And when the balance of mind will be lost, we will commit mistakes, we will do wrong things, we will do wrong actions. And as a result, we will pay very heavily in the form of lot of pain and suffering. So this Sthit Prajna person has this ability to withdraw his senses from the dangerous area, from the area where he is able to see the threat. And later on, again, these two important shlokas which I was mentioning, Dhyayato Vishyan Punsa Sangaste Shupajayate Sangat Sanjayate Kamah Kamat Krodha Vijayate Krodhat Bhavati Sammoha Sammohad Smriti Brahma Smriti Bhranshad Buddhinasho Buddhinashat Pranashyati.
तो विषय अभी राग is towards what? Raga is towards Vishay. Various objects of senses are the Vishayas. They are the objects. We get attached to the objects. तो विषय कैसे पांच विषय, 5 प्रकार के विषय हैं, 5 ज्ञान इंद्रियों के लेके, आंखों के, कान के, नाक के, टेस्ट के, टच के, 5 प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको ही विषय कहा गया है। तो जो भी हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, नाक से सूंघते हैं और टेक्टाइल सेंस के द्वारा उसके टच का, उसके प्लेजरेबल टच का अनुभव करते हैं, ये सभी जो है ये 5 विषय हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों के हैं। तो जो विषयों का चिंतन करता है, अब चिंतन कौन करेगा? जिसको अटैचमेंट है वही चिंतन करेगा, जिसको अटैचमेंट नहीं है वो आदमी उसका चिंतन नहीं करेगा। तो अटैचमेंट है तो चिंतन करेगा, और जब चिंतन करेगा तो क्या होगा? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुपजायते। जब उसका ध्यान करेगा, जब उसका चिंतन करेगा तो उसमें संग उत्पन्न होगा, उसके साथ में जाएगा, उसको पाने की कोशिश करेगा। संगात संजायते काम, उसमें काम उत्पन्न होगा, उसमें डिजायर उत्पन्न होगी, अटैचमेंट क्रिएट हो जाएगी। और ये पूरा प्रोसेस ये 2 श्लोकों में बहुत सुंदर ढंग से बताया गया है। तो जब ये तृष्णा जो है वो लोभ का रूप ले लेती है, तभी यही सब होता है। तो संग होने के बाद में काम उत्पन्न होगा, काम उत्पन्न हो गया तो एक चीज हमको समझ में रहनी चाहिए, वी मे हैव n number of attachments, but life tells us, life experiences tells us that not all desires are going to be fulfilled. We are not going to get everything we want. Nature cannot provide this. It is not the way nature functions. So we will be denied. And many times when we are denied something, what happens? We become angry. We develop dvesha. We become angry. So, krodha, after this kama, the krodha arises. And when the krodha arises, what the anger does? We know that anger has been termed as half madness. We lose all the critical thinking ability when we are angry. For that matter, any strong emotion, it takes away our sense of balance, sense of proportion. We are not able to think correctly. We are not able to, assess situation correctly. So after the krodha, sammoha, illusion, and this way this shloka goes on, that ultimately what happens is there is a imbalance in the mind, smriti bhansha, the buddhi nasha, and one loses the discriminative ability, one loses his buddhi. और एक बार बुद्धि नष्ट हो गई तो आदमी जो प्राणी है वो खुद ही नष्ट हो जाता है, बुद्धि नाशात वो आदमी खुद नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयों का चिंतन है, ये विषयों का साथ अटैचमेंट है, if it is clister, then this is the consequences which Bhagavad Gita beautifully captures. And even in Vyas Bhashya and Aranya, it has been stated that we lose critical faculty of thinking correctly, we lose discrimination, विवेक खत्म हो जाता है, और indiscriminately जब हम लोग इसमें पड़ जाते हैं, तो see all the bad habits are formed like that. All the what is known as addictions, we get addicted, or wrong habits, bad habits, they are formed in this manner only. We enjoy something, we get pleasure out of it, we get attached to it, we want to repeat it. The more we repeat it, the stronger it becomes. It becomes ultimately a craving, and it becomes unstoppable. And anything which is unstoppable, it can have control of our mind rather than we controlling it. So it becomes a big problem for us. So this is where the attachment has been termed as Klesha. That's why it is a Klesha, because any attachment will ultimately lead to, if this attachment is moving in this Klista direction, then ultimately this will take us in the direction of pain. It will create suffering for us. And then when it is creating pain for us, then it is called Klesha. So that is why Raaga is a Klesha. And then, you see, involuntarily we are drawn to it. The most surprising part is that when throughout the day, whatever we are doing, we are guided by this Raaga.
Raga and Dvesha both. These are the principal movers, prime movers. Our entire day-to-day life is moved by these two motivations. And that's why Aranya has very beautifully said that in attachment, senses and desire are drawn involuntarily and unconsciously towards objects. And the power to consciously restrain desire disappears. Due to raga, the impure is seen as pure and desirable. By this, the self gets linked up with the senses and their object. तो ये जो इसी से आत्मा इंद्रिय तथा विषय के साथ में बद्ध हो जाता है. The Purusha or the pure consciousness, it gets linked with these senses and objects and it gets caught into that. और जब ऐसी अवस्था होती है तो उसको बद्ध अवस्था बोलते हैं, या it is Atma is as if tied down to senses. That is what Aranya says. So Raga can do that. So now let us understand that, what is Raga and how Raga is formed. And, Raga has been translated as something which colors the mind. It tinges the mind. It influences the mind. इसके लिए संस्कृत में एक बहुत खूबसूरत शब्द इस्तेमाल हुआ है, उपरंजक. सो राग जो है ये उपरंजक है जिससे हमारा मन प्रभावित हो जाता है. Our mind gets colored. It is like wearing the colored glasses. If we are wearing pink glasses, everything looks pink. If we wear green glasses, everything looks green. So when the mind is tinged by raga, everything looks ragamay. Perhaps that is the reason that when a person is in love, he can't think of anything else but the object of love. And now science has proven it. Psychology, biology, they have conducted several experiments, and they say that when a person is in love, as if he shuts down all the critical abilities of the brain to assess the things correctly and critically. So he loses that ability of discrimination. This is what has happened when a person is in love or when the raga is there. So this way raga is affecting us in a very, very strong manner, and it is guiding our actions. It takes charge of our mind, and involuntarily we are doing certain things which we don't even want to do. Now the question comes that when we try to understand raga has got many shades. It can have many shades. As I was telling you right at the beginning when we started discussing the kleshas, each of the klesha is generic in nature. And when we talk about generic in nature, they can give rise to so many emotions. And emotions can be both positive as well as negative. So that raga which is leading us to klishta vrittis and which is strengthening the sway of the gunas, which is responsible for strengthening the kleshas, and it is through the klishta vrittis, more and more klishta vrittis we are experiencing. Now that kind of raga has to be discarded. It has to be eliminated. It has to be worked upon. So that is the purpose of yoga. And that's why you'll find that raga, dvesha and abhinivesha, these three give rise to most of the mental states we are experiencing throughout the day. And in the first chapter we saw there are 5 vrittis, klishta and aklishta. Some vrittis are klishta, some vrittis are aklishta. So all the vrittis which have got klesha as motivation. So wherever avidya, asmita, rag, dvesh, abhinivesh, they are acting, those vrittis, those mental states which are coming because of these 5 kleshas, we are enjoying them, we are knowing them, we are experiencing them. Those vrittis are going to create more and more pain for us. And that's why they are known as klishta vrittis. As against that, there are aklishta vrittis. So now when we look at this nature of the kleshas, last time when we were talking about asmita, we saw that in asmita, 2 things were there. When asmita is, or the consciousness is directed, the self-consciousness, asmita is in the form of self-consciousness. So when the self-consciousness is drawn outward towards the object, it goes on indulging in it
and it takes the form of klesha. But if this asmita, if this self-consciousness is directed inward, it is trying to understand itself, it is trying to understand its true nature. Last time I gave the example of Raman Maharshi, who said, who am I? So if a person has a spiritual exercise, he asks, who am I? What is the nature of this I? Why? What is the true form of this I? Then one becomes aware that in this I, there is also this consciousness, this chetna, which doesn't change. So how do we become aware of that chetna? How do we go in that direction? अभी योग में हम लोग बोलते हैं पुरुष और प्रकृति. पुरुष और प्रकृति को जानना है तो हम कहाँ जानेंगे? प्रकृति तो हम देखते हैं कि हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी इंद्रिय, बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है सभी कुछ प्रकृति है. तो उसको तो जानना आसान है. मुश्किल बात तो यही है कि पुरुष को कैसे जाने, चेतना को कैसे जाने, या ईश्वर को कैसे जाने, आत्मा को कैसे जाने, और आत्मा को जानने का हमारे पास माध्यम क्या है? इसको जब हम गहराई से सोचेंगे तो हमारे पास हमारा मन ही है, ये हमारी बुद्धि है, हमारी अस्मिता ही हमको सिखाएगी. ये जो हमको अनुभवात्मक अस्मिता है, जो मैं एक अनुभव है, मैं एक प्रकार की कॉग्निशन है, एक प्रकार का परसेप्शन है. इस परसेप्शन को जब हम स्टडी करेंगे, दैट मीन्स वी आर टर्निंग अवर कॉन्शियसनेस इनवर्ड रादर देन टर्निंग इट outward towards the object. So when we are turning it back towards our own selves, we are trying to know ourselves. आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, इसको जब हम पाने का प्रयत्न करते हैं तो यही अस्मिता जो है वो अब क्लेश न रह के हम लोगों के लिए एक टूल बन जाती है, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाती है, जिसके जरिए हम अपने आप को जान सकते हैं. तो इसी को अस्मिता को, ये अस्मिता वगैरह या राग जो है, ये योग के पारिभाषिक शब्द हैं. हर सिस्टम के कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं. तो जैसे अस्मिता है, अस्मिता मात्रा है, बुद्धि है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, ये सब पारिभाषिक शब्द हैं योग के, जहां पे उनकी एक निश्चित मीनिंग है, एक निश्चित प्रकार से उसको समझा जाता है. तो इस ढंग से जब हम देखते हैं तो अस्मिता मात्रा, अस्मिता बोलचाल के लैंग्वेज में बोलते हैं इट इज मेयर एग्जिस्टेंस इज व्हाट इज अस्मिता. बट ये अस्मिता एक इनर इंस्ट्रूमेंट है. योग में दो बातें कही जाती है, बाह्यकरण और अंतःकरण. तो मनस, बुद्धि, अहंकार, ये अंतःकरण का हिस्सा है, और ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये जो है ये इसको बाह्यकरण कहा जाता है. मन जो है वो उभयकरण है, वो बाह्य में भी जाता है, वो अंदर में भी आता है. तो अंतःकरण के द्वारा हम अंदर जो हमारे अंदर चेतना है उसको हम जान सकते हैं. तो देन दिस बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ आवर ओन सेल्फ. देन इट बिकम्स हेल्पफुल. तो ये जो थोड़ा सा ड्यूअल नेचर जो क्लेशों का है, इसको थोड़ा सा समझना जरूरी है. नॉर्मली जब हम योग सूत्रों का अध्ययन करते हैं, या कई बार हम योग सूत्रों के क्लासेस अटेंड करते हैं, कई टीचरों से हम क्लेशों के बारे में सुनते हैं, तो हमको हर कोई यही बोलता है क्लेशों को, क्लेश हैं उनको छोड़ देना है, उनकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है. लेकिन एक महत्वपूर्ण बात जो याद आ रही है, डॉक्टर जयदेव हमेशा कई सालों में कई बार मैंने उनके मुंह से ये बात सुनी थी, और अभी भी जिन्होंने भी डॉक्टर साहब से कुछ सुना रहेगा, शायद उन्होंने भी सुना रहेगा, ये उनके ध्यान में भी ये बात आई रहेगी. तो डॉक्टर साहब बोलते थे कि द ग्राउंड ऑन विच वी फॉल इज द ग्राउंड ऑन विच वी स्टैंड अप एंड वॉक. So the mind which is binding us is the mind which can liberate us if it is used correctly. So ये अंतःकरण, कर्ण, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसको समझने का प्रयत्न किया. कर्ण मतलब कर्ण में कॉन्शियसनेस का आक्षेप करना, ये क्लेश हो जाता है. जब कर्णों को हम कॉन्शियसनेस समझ लेते हैं तो ये क्लेश हो जाता है. लेकिन अगर उन कर्णों का हम सही ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो हमको ये कॉन्शियसनेस क्या है उसको समझने में मदद मिल सकती है. तो ये मन के द्वारा ही हम अपनी मन की वृत्तियों को देखते हैं, मन के द्वारा ही हम मन की वृत्तियों को देखते हैं. इसमें ये जब मैं बोल रहा हूँ मन के द्वारा ही मन की वृत्तियों को देखते हैं, तो महावीर भगवान का एक सेंटेंस याद आता है.
आत्मा को आत्मा के द्वारा देखो, मन को मन के द्वारा देखो, गहराई से देखो। ये जो आचार्य तुलसी और महाप्रज्ञ जी ने जो प्रेक्षा ध्यान बनाया है जैनियों में, उसमें उसका मुख्य सूत्र ये है कि गहराई से देखो। तो जब देखो मतलब कहाँ देखो? ऑब्जेक्ट्स को नहीं देखना है, खुद को देखना है, अंदर को देखना है। तो ये जब अंदर को हम देखेंगे देन इट बिकम्स अ गुड इंस्ट्रूमेंट। तो सेम वे राग के अलग अलग रूप हैं, राग के बहुत सारे स्वरूप हो सकते हैं। अब उसमें जैसे मैं ये देख रहा था, हमेशा मेरे मन में ये आता कि ये कैसे ड्यूअल नेचर इनका है। तो इसमें से जो भी राग हमको दुख की तरफ देख लेके जाता है, क्लेशों को बलवान करता है, अस्मिता को, अविद्या को बढ़ाता है, हमारी अटैचमेंट्स बढ़ाता है, वो तो क्लिष्ट है। लेकिन ऐसा भी राग है जो हमको इनसे थोड़ा बहुत मुक्त कर सकता है। वो कौन सा राग है? अगर हम श्रद्धा को ले लें, श्रद्धा एक प्रकार का अनुराग है, श्रद्धा एक प्रकार का राग है। जब हम अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं तो एक प्रकार का राग है, वो एक प्रकार की अटैचमेंट है। जब हम ईश्वर के प्रति अनुराग रखते हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति रखते हैं, तो वो भी एक प्रकार का अनुराग है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो राग का स्वरूप है वो बदल जाता है। तो राग के अगर अलग अलग रूप हम लोग देखेंगे तो श्रद्धा एक है, उसके बाद में थोड़ा सा एक माइल्डर वर्जन जो राग का रहता है। हम लोग की अटैचमेंट जब भी बहुत स्ट्रांग होती है तो अलग हो जाती है। लेकिन प्रीति, एक दूसरे के साथ प्रीति रहना, स्नेह का, जैसे अफेक्शन जिसको हम लोग बोलेंगे, तो इट इज नॉट एन अनडिजायरेबल थिंग। इन द ऑन द कॉन्ट्री, फॉर द पीसफुलनेस एंड फॉर द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, स्नेह होना, अफेक्शन होना कभी कभी आवश्यक हो जाता है। इट इज रिकमेंडेड दैट वी शुड हैव अफेक्शन फॉर ईच अदर, वी शुड हैव स्नेह फॉर ईच अदर, वी शुड केयर फॉर ईच अदर। तो प्रीति के बाद में स्नेह आ जाता है। और जब ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म लेता है, क्लेश के फॉर्म में लेता है, तो जिसको हम लोग प्रणय, काम मूलक जो फॉर्म फीलिंग्स रहती है, जिनका सेक्सुअल कंटेंट सेंसुअल कंटेंट रह जा ज्यादा जिसमें, तो उसको प्रणय भी एक प्रकार की अटैचमेंट है। प्रणय में विदाउट अटैचमेंट प्रणय नहीं हो सकता। तो प्रणय भी एक प्रकार का उसका भेद है। और आगे देखेंगे तो करुणा, जब हम किसी व्यक्ति के प्रति जो दुख में से गुजर रहा है उसके प्रति जब हम करुणा दिखाते हैं तो करुणा भी एक प्रकार का राग का स्वरूप हो जाता है। और फिर और एक है जो मतलब मैत्री, मैत्री भी एक प्रकार का राग है। किसी से मैत्री भाव रहना मतलब हमको अच्छा लगता है वो व्यक्ति के साथ ना, उसी के हम किसी व्यक्ति को जिसको हम लोग डिसलाइक करते हैं उसके साथ मैत्री नहीं होती है। मैत्री उसी के साथ होती है जिसके साथ हमारा थोड़ा संबंध बनता है और हमको अच्छे लगते हैं। तो मैत्री भी एक, मैत्री और मुदिता, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसपे, कोई धर्मनिष्ठ है, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसमें अप्रिशिएट करना, उसको अप्रिशिएट करना और उसको कॉम्प्लीमेंट देना कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो, और मन ही मन प्रसन्नता फील करना कि चलो ये व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है। तो इस प्रकार के ये शेड्स हैं राग और द्वेष के। द्वेष के भी इसी प्रकार के शेड हैं, हम लोग अगले बार देखेंगे। पहले मैंने सोचा था कि राग और द्वेष के दोनों सूत्र एक साथ लेंगे, लेकिन ये दोनों विषय इतने गहन हैं और इतने गहरे हैं कि इसके स्वरूप को समझना थोड़ा जरूरी है, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन करना जरूरी है। उसका कारण ये है कि बहुत सारी गलत चीजें हम लोग करते हैं, ये राग की वजह से करते हैं। माँ बाप, पेरेंट्स अपने बच्चों की आदतें बिगाड़ देते हैं, वो इसीलिए कि राग है। अगर राग नहीं रहता था तो डिसिप्लिन में रख सकते हैं। और यही बात हर जगह पे लागू होती है। जहां जहां राग है, हमको अपने दोस्तों के साथ राग है, अटैचमेंट है, तो उसके गुनाहों को हम माफ कर देंगे, उसकी गलतियों को हम देखेंगे नहीं, एंड वी विल एनकरेज हिम टू डू रॉन्ग थिंग्स इनडायरेक्टली। ऐसी बहुत सारी चीजें, अलग अलग एग्जाम्पल देखे बैठेंगे तो हर जीवन के हर दिन भर में पता नहीं कितनी बार हम राग के शिकार होते हैं। राग के वजह से हम अनदेखा कर देते हैं, राग की वजह से समझ के भी हम समझना नहीं चाहते, राग की वजह से हम खुद गलत काम करते हैं और बाद में हम सोचते हैं अरे ये मैंने कैसे कर दिया। ये कर दिया क्योंकि अटैचमेंट थी, क्योंकि राग था। तो ये जो राग है इसकी वजह से बहुत कुछ हमारे जीवन में होता है। और अल्टीमेटली एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज के तौर पे, अब इसको राग को तो मतलब काफी समय तक हम इसको डिस्कस कर सकते हैं,
शायद राग के ऊपर 1-2 दिन हम समय बिता सकते हैं और देख सकते हैं कि एक एक राग की एक्सरसाइज लेके किस प्रकार से राग हमको प्रभावित करते हैं, किस प्रकार से हमारे दुख का कारण सब बनते हैं। तो अब एक ही सजेशन के साथ में आई विल कंक्लूड कि व्हाट वी कैन डू इज लेट अस टेक सम एग्जांपल्स वेयर वी हैव गॉन when we have suffered a lot. We have suffered a lot. हम लोगों ने बहुत दुख का अनुभव किया है और कोई एक दुख को लेके उसको थोड़ा सा हम लोग विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे. Any experience where we have experienced severe pain, maybe from a person, maybe from a thing, maybe from within our own personality it has arisen, maybe because of some attitude we have, because of maybe some attachment we have. We have gone through some pain. वो पेन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि उसका सोर्स क्या था, कहाँ से वो दुख आया रहेगा थोड़ा सा. तो ये वीक के लिए, पूरा वीक के लिए एक एक्सरसाइज रहेगी कि जिसको भी हम दुखमय मानते हैं, जिस अनुभव को हम दुखमय मानते हैं या जिस चीज को हम दुखमय मानते हैं, उसके ऊपर थोड़ा विचार करने का कि ये दुखमय क्यों है और ये दुख कहाँ से आ रहा है. इसको थोड़ा सा चिंतन करेंगे. हो सकता है कि इसमें राग के साथ में द्वेष के भी कुछ क्वालिटीज हमको समझ में आएगी, बट ये वीक के लिए हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करेंगे. तो आगे फिर इसके बारे में और देखेंगे कि कैसे राग और द्वेष ये दो एक ही सिक्के के पहलू है और कैसे अगर राग है तो द्वेष रहेगा ही, अगर हमको अटैचमेंट है तो उसके साथ में डिसलाइक आएगा ही, हेटरेट आएगा ही. तो इसको हम लोग आगे देखेंगे. पर अभी इतना ही है कि राग की वजह से क्लेशों का मुख्य काम है इट डिस्टॉर्ट्स द परसेप्शन. जो भी हमारे सामने परिस्थिति आ रही है उसका सही आकलन करना, उसका सही असेसमेंट करना and act accordingly. This is what is the right thing to do. But because of raga, we are not able to assess, because our mind gets affected, our mind gets colored. With raga, the mind gets colored and mind sees only that which raga wants us to see. And then the mistake occurs. Then we commit mistakes and we suffer as a consequences. So we can analyze it a little bit. So if there are questions. I had a question. Yeah. Actually, there are so many likes and dislikes. Yeah. So one cannot, I feel, work on individual likes and dislikes because it will become very torturous. Like, for example, I have a very strong liking for food. I wanted, मुझे variety चाहिए, मुझे particular temperature चाहिए. I wanted hot and this and that. I want on time. Then there are some routines which I'm very attached to, like I want to sleep on time. I want to do my practices. I want to go for a walk and all that. And I like, ऐसा कितने सारे हैं likes. Now, actually, even the like for good things has to be checked. I'm going to say at times it becomes rigidity and it creates imbalance. So, like, what would be the right way to overcome them? Because individually to work on each like, I don't know. That way or what? You got my question, right? Yeah. Am I audible? Yes, yes. Yeah, because I can't see you, so somehow it got disconnected. Second on the top left. Okay, okay. Yeah. Next to. Yeah, yeah. So what you are saying is right. Under the influence of Western thing, we can make a big list of attachments, big list of likes and dislikes. And it is not possible to work on each and every like and dislike.
That's why you will find that Patanjali has given everything in the form of 5 kleshas only. He doesn't talk about many kleshas. He talks about 5 kleshas only. So the principle is Raaga, Dvesha, Abhinivesh, which are day to day seen. Asmita is little deeper, and still deeper is the avidya. So yoga wants us to work on these kleshas only. So when we are talking about these likes, what happens is, if it is a klesha, it will create pain. And if we are willing to go through that pain, then we will not like to change. So continuing with this example of food, the taste of food and the attachment to the food, it creates its own consequences. And that consequences could be in a very, very negative way. You know, a person may be spending a lot of money, spending a lot of time. He might be, paying the cost in the form of ill health, or maybe overweight, or maybe various kinds of issues are there with the overeating, or when a person is fond of food to such an extent. I often give the example that a new restaurant comes in town, and people just travel all the way to the town, and they will take out a day just to visit that restaurant and eat something which they have heard of. So this is a very heavy price actually. But as long as we are not able to see any fault in it, we would like to continue it. It's only when we suffer, then we will, or when we see that this attachment is really distorting the perception, in the sense that we are not able to act in a correct manner, then perhaps we will think about it and we'll try to give up. But generally, the kleshas are to be worked like, individually, each klesha, like likes, dislikes, hatred. Every time we are required to do something, we are following, it is a situation is arising where we are going to act in a certain way. Or whenever we are listening to our desires and cravings, that time yoga wants us to be aware as to why we are doing it. And then we have to question that why we are doing it. Is it being guided by the like and dislike, or it is the right thing to do? So here, this is where the viveka comes. अभी जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें यही कहा था कि राग और द्वेष अभिनिवेश की वजह से क्या होता है, हमारा विवेक नष्ट हो जाता है, हमारी बुद्धि जो है वो प्रभावित होती है, हमारी विवेक की क्षमता, सही क्या है गलत क्या है, इस बात को समझने की क्षमता हमारी कम हो जाती है. तो अगर हम योग के मार्ग पर आगे जाना चाहते हैं, तो जो भी हम कर रहे हैं जीवन में, कुछ चीजें हम हैबिचुअली करते हैं, ऑटोमेटिक लेवल पे करते हैं, कोई चीजें हम कॉन्शियसली करते हैं. ज्यादातर तो इस बात पे हम लोग अगली बार बात करेंगे थोड़ा गहराई से, लेकिन ज्यादातर चीजें हम ऑटोमेटिक करते हैं, बिना सोचे समझे करते हैं. तो वी आर गाइडेड बाय लाइक्स एंड डिसलाइक्स. इसीलिए योग बोलता है कि कोई भी काम करने के पहले पूछो कि आर यू बीइंग गाइडेड बाय लाइक एंड डिसलाइक, और यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज राइट. So in any given situation, there is something which is right, which needs to be done. And Raga and Dvesha will always prevent us from doing that right thing. पेट भर गया है, लेकिन चीज पसंद है, इसीलिए पेट भरने के बाद में भी एक और खा लेता हूं. This is what it will do. अभी नहीं खाना है, अभी बस हो गया, तो भी जबरदस्ती खा रहे हैं, क्योंकि लाइक है, क्योंकि आएगा, क्रेविंग है. भूख नहीं है तो भी क्रेविंग है. अभी कल ही में कोई प्रोग्राम देख रहा था, बोला ज्यादा से ज्यादा बीमारियां, कोई आंखों के बारे में कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर बात कर रहा था कि तुम्हारा पेट भरा हुआ है और तुमने वापस कुछ खा लिया, तो इसका बहुत ज्यादा मतलब नुकसान बॉडी को होता है. तो जिसको ज्यादा खाने की आदत है, जिसको क्रेविंग है खाने का, अक्सर ये मिस्टेक उससे होती है कि वो ज्यादा खा लेता है, या जब भी नहीं खाना चाहिए तभी खा लेता है, गलत किस्म का खाना खा लेता है. एंड देन द कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर. Sometimes the consequences are little lighter, we can get away with it, so we continue. But sometimes the consequences could be very severe, and that time we have to seriously ask ourselves. आदमी जब भी बहुत indiscriminately खाता है, कुछ अगर severe disease हो गया तो बाद में उसको रोकना ही पड़ता है, चाहते हुए भी वो खा नहीं सकता है, ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो जाता है. तो योग ये बोलता है कि be aware, whatever actions we are doing, we have to ask ourselves, are we being guided by kleshas, or we are being guided by what is right? A yoga student has to be always guided by dharma. यही धर्म भाव है कि सही क्या है.
ये परिस्थिति में सही क्या, पेट भर गया, एक चपाती खाया, पेट भर गया, ठीक है, I should stop. This will be dharma. But because of raga, if you overeat because it is tasty, then it will become adharma, it will become klesha, and it is surely going to result in pain. There is a question in the chat box also, sir. Just a moment, I'm not able to open the chat box. Okay, I will read it to you. Just a moment. Yeah. Can you please clarify how Purusha or pure consciousness can be contaminated by external objects? That is the first question. There are 3 questions in all. Okay, let us take this. Yeah. See, the Purusha never gets contaminated. It is always pure. But last time when we were discussing about avidya and asmita, we saw that the Purusha and buddhi, they are taken as one. So the reflection of Purusha or the consciousness of Purusha is caught into the buddhi, and buddhi assumes the form of consciousness. It is this consciousness which always gets affected by it. So when we are going through very negative experiences, we are saying, I am sad, I am unhappy, my mind is deluded, I am not thinking correctly. Now all this is happening in this empirical consciousness which we have, through which we are just now discussing. It gets affected by wrong things. It gets affected by the kleshas. Pure consciousness, Purusha, never gets affected. And last time I gave the examples also, like sun and earth. Whatever happens on the earth, it is because of the sunlight. But whatever happens on earth is in no way affecting the sun. The sun is shining its own glory. Like that, Purusha is always in its own pure form. Whatever is happening in the form of buddhi, the suffering, the enjoyment, the pleasure, the moha, the pain, everything is in buddhi. So buddhi suffers. Yeah, second question. So the second question is, any practical tips that we can incorporate in daily life to keep raga under check? Just now, when I was replying to Ajay, this was the answer that, yes, we might be doing things automatically. And I had reserved it for the next time. I'll go into the detail of it next time. But then we have to always ask, we have to be aware that, am I acting under some kind of compulsion of senses and desires? If we are acting out of the compulsion of sense stimuli and some kind of attachment, some kind of raga, then we are not freely acting. And this is definitely klesha, and this will surely end up in some kind of pain and suffering for us. And that's what yoga wants us to be free from. So always maintaining this awareness, and particularly the strong attachments and cravings we have. If we can maintain awareness of them, then we can escape a lot of suffering. true. So the third question is, can money also a source of attachment and it is not a part of the 5 senses? It is. Money is very much there. People get attached to money. Money is an instrument, money is a tool. You get attached to it. Then it's no longer a tool. It owns us. Ownership ho jati hai. We think we are owning money, but the money owns us. It is not a part of the 5 senses. It is not part of the 5 senses, but through senses we connect to it. There are also situations where, money becomes the motivating force for anything. You might have enough of it, and it's not driven by, okay, I want to buy ABC. It's not driven by that. But is that also raga then? It is a strongest raga. Achha. Because when one is having this craving which cannot be stopped, that is what is termed as lobha. आदमी का नीड के हिसाब से अगर कोई चीज जरूरी है तो वो तो ठीक है, लेकिन वो नीड पूरी हो गई, उसके बाद में भी if he goes on accumulating, if he goes on continuously thinking about it, it becomes lopsided, it becomes a klesha, and ultimately the suffering is the result. Thank you. Yeah.
there was a WhatsApp which said that if you like a flower, you will pluck it, but if you love a flower, you will water it. Yeah, Oh, like made a lot of sense. yeah. Yeah, it makes a lot of sense because if one is destructive, the other is constructive and helpful. So one is Klesha, the other is Aklesha. So one more question from me, like as you said that Maitri, Karuna, Mudita, Sneha, Preeti, Shraddha and all, which are all the Aklishta Vritti, which initially we have to cultivate, and Patanjali has said कि उसे भी छोड़ देना. Yeah. But then we are cultivating it. So like, is it the Pratipaksha Bhavana we are developing? Like, cultivating that we are working on, which is Klishta Vritti. No, technically, when we talk about the Shraddha, Maitri, particularly Maitri, Karuna, Mudita, these are part of the parikarmas. These Yeah, are the Chitta helpful Prasada. techniques. So these are positive bhavnas. These are positive bhavnas which are to be inculcated as niyama. Shraddha is the primary thing. Shraddha also has to be inculcated and deepened because it is a kind of anuraga, or it is a kind of desire for upliftment, desire for God, desire for knowing the truth, desire for progressing, attaining peace. Now that is what Shraddha is. But Pratipaksha Bhavana is a totally different thing. Pratipaksha Bhavana, it has been described as differently in Sutra 34 and 33 of chapter 2. And it will come later on. So in Pratipaksha Bhavana, has to be a particular kind of logical thinking, a discriminative thinking has to be generated, where one is able to see the connection between what one is craving for and the consequences in the form of dukkha, ajnana, anantaphala. When one is able to see the connection between what one is desiring and the end result in the form of dukkha, and one desists from doing that thing, then that will constitute practice of Pratipaksha Bhavana. It will come later on. Yes, sir. So I know that I just thought कि like whenever whichever vritti like klishta vritti अगर वो आती है समझ रहे हैं तो either we are see whatever form we are changing it like in the positive form, so that these are the positive vrittis in the form of mudita or maitri or karuna and all that. So it is just that we are developing this, cultivating it, and then in whatever klishta vritti it is there, and then this will overpower the klishta vritti. That's what even I just. Yeah, that is right. But only thing is that when we are talking about Maitri, Karuna, etc., they have got a positive aspect to that. But even that is not good, no, like finally, Yeah. finally all the vrittis, Yeah. according to. So that we have seen in chapter 1, with yoga chitta vritti nirodha, and vrittis are klishta and klishta. So that has been already stated and established. Yes. But when we talk about Maitri, Karuna, Mudita, these are positive virtues. Pratipaksha Bhavana is not a positive virtue. It is a technique where we think correctly. Okay. It is a critical thinking. It is a viveka-based thinking where we are able to see connection between what is craving for us. What हमारा लोभ कैसे हमको दुख में ले जा सकता है, ये सोच को समझने के लिए जो है वो प्रतिपक्ष भावना. So that is a technique which is different from this positive techniques. That is the only difference. Otherwise, all are techniques in yoga. Depending on life situations, we have to apply them. For some people, some technique may work. For some other people, other techniques may work. Yes, sir. And one more thing, sir, जैसे गर्द आपने तृष्णा के लिए बताया. So even Buddha has like the trishna, the desires, which is the sensation, जो वेदना जो है वो arise होता है in the प्रत्युत्तर समुत्पाद में जो आता है, the 12 chains. So it is the same concept, right? So Vyasa has also mentioned. हाँ. So ये जो रागा अनुशयी, ये जो अनुशयी है, ये अनुशयी वही सेंसेशन को, the time was not there, so I did not venture into that. ये जो वेदना है वो वेदना वही है. Sensations, pleasant sensations
अनप्लेजेंट सेंसेशन। वेदना दो प्रकार की होती है। तो प्रतीति समुत्पाद की जो वेदना है वो दो प्रकार की है, एक निगेटिव भी है और एक पॉजिटिव भी है। जो पॉजिटिव है वो हमको राग उत्पन्न करती है, जो निगेटिव है वो द्वेष उत्पन्न करती है। बट जब ये प्रतीति समुत्पाद बताया, तब ये दिस इज द डिस्कवरी ऑफ द बुद्धा वैसे बताया, लाइक इन दिस चेन ऑफ अविद्या नाम रूप विज्ञान एंड ऑल, wherein what you believe, okay, what you believe, because what you believe and what you think, is it desirable, is it correct knowledge? Should we work on this idea of raga? What Buddha says, does it match with Patanjali? yes, So it is desirable. Why bother about it? Who said it and okay, how you will know that who has said it? How you okay, will know, how anyone else will know? Because that is thousands of years back it was decided. And it yes, is coming. So how do we know that? But if we are convinced about it, we can start working on it. yes, very much. Yeah. So if you have time for one more. Yeah, please. Oh, I forgot what I'm going to ask. Sorry. Sorry, I just forgot there. So if I'm aware of a particular raga in me, but still I'm not able, I know that this food at that temperature or whatever is not a desirable trait, but I'm not able to overcome it. Yeah. And I'm not seeing that it's making me suffer. For example, I've been doing this for a long time. What does that mean? You think it's not making you suffer? You think it's not making you suffer? Like Ajay Bhai said, he's used to a particular temperature of food, and he feels that's his, he's attached to it. Yeah. And it's a pleasure, and it's not affecting his. So we are free to live in a fool's paradise. It is affecting me. We had gone to Malsar, and there I was not happy with the food. And I could see, like, that attachment was there. Because the type of food I'm used to at home, the temperature and all that, I was not happy. So that I was, yes. I can give you a simple example. I can give you a very severe example. एक आदमी जो शराब के नशे में धुत गटर में पड़ा हुआ है, he thinks he is the king of the world. He thinks he is in the heaven. एक सिगरेट स्मोकर जो है, हाँ बेटा, ओपन तो एक सिगरेट स्मोकर है, वो हमेशा ये बोलता है कि भाई मैं तो बहुत साल से पी रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ अभी तक, और it gives me pleasure, it reduces my stress. Now if we scientifically know about the facts, then we know that what he's doing is not a desirable thing, and he is harming himself, but he is convinced that what he is doing, it will not harm him or he will escape. एक छोटा सा लाइटर नोट पे इसको खत्म करेंगे. पहले बहुत साल पहले मैंने कई बार ये बात बोला है, धर्मयुग बोल के एक मैगजीन आता था हिंदी, धर्मयुग. तो धर्मयुग में एक कार्टून का एक ये आता था, छोटा सा डब्बू जी, आबिद सुरती बोल के कार्टूनिस्ट था, वो उसका स्क्रिप्ट आता था, आबिद सुरती. तो डब्बू जी, तो कोई आदमी डब्बू जी को बोलता है, डब्बू जी सिगरेट मत पिया करो, आदत लग जाएगी और नुकसान करेगा. तो डब्बू जी बोलते हैं, क्या बात कर रहे हो, पिछले 25 साल से पी रहा हूं, अभी तक आदत नहीं लगी. That can be the case. We stop it here. Yes, sir. Wonderful Thank you session, very much. and wishing everyone a very happy Diwali. Happy New Year wish you in all the advance. same. Happy Diwali to all. Wish everyone happy Diwali. Thank you, sir. Happy Diwali. Happy Diwali to all. Happy Diwali. Thank you, Thank you, sir. Happy sir. Diwali. Happy Diwali to everyone.